morning students. Nice to see you once again beta, and hopefully that you have completed your all the practical questions regarding the chapter depreciation chapter के आप दोनों मेथड के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। Got it? आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रोफिशिएंसी आपकी वर्किंग्स में भी आएगी और आपके क्वेश्चन के ठीक होने की जो पॉसिबिलिटी है उसमें भी। So now we are discussing next chapter, that is provisions and reserves. In this chapter we will discuss in details about provision and reserves. So what do we mean by provision? First of all, we are to begin with this. Provisions means the amount which we are keeping aside to meet known liabilities. आपको याद होगा कि हमारी जो concept हम discuss कर रहे थे prudence concept है, according to it every business organization, if there is possibility of any loss in future, of any liability in future, तो पहले से ही advancements prepare की जाती है, पहले से ही उसके लिए preparation शुरू हो जाती है। And provision is a right example in that direction. So if there is situation of liabilities which we are to face in future, then organizations create a specific amount, keep a specific amount to meet these known liabilities which are going to arise in future are known as provisions. So provisions are created to meet known liabilities. कौन सी liabilities? जिनको हम जानते हैं, अनजानी situations नहीं है, ठीक है ना? Because uncertainties may be of two types. एक तो हमें पता नहीं है, expected और एक नहीं expected, तो ये known liabilities. And next point is we are sure that this problem is going to like depreciation provide करना है, provision for doubtful debts है। Doubtful debts क्या होता है बेटा? जब when we sell goods on credit basis, then the persons to whom we are selling goods on credit basis are known as our debtors. अब उन debtors में से कितने लोग हमें देंगे, कितने नहीं देंगे, we are not sure. The amount जो वो नहीं देंगे that is categorized as doubtful debts. हम doubt में रखते हैं, doubt we are in doubt कि they will pay it or may not. So इसलिए ऐसी liabilities को meet करने के लिए पहले ही provision for doubtful debt को create करके रखा जाता है, ठीक? Here liability is known but exact amount of happening that liability is not sure. That's why थोड़ा सा इसका amount है उसे determine करना थोड़ा सा मुश्किल है. Now next is it is charge against profits. हम profit and loss account में इसे profits में से as deduction show करते हैं जिससे हमारे profits concern rate के कम होते हैं. That's why it is treated as a charge against profit. Got it? So this is about the meaning of provisions. क्या है बेटा? These are created to meet known liabilities. Amount is not certain, but we are supposed to create it. Next, उसके बाद हमने discuss किया है that the provisions are created as a charge against profit, and in every situation we have to pay. We have to make provision. We have to charge it for profit and loss. Got it? Now, what is the purpose? Why these provisions are created? That is the need, purpose, importance of calculating, of preparing these provisions. क्या है? पहले तो इसके examples क्या हो सकते हैं बेटे? The example of provisions may be provision for taxation, tax लेना है हमें उसके लिए provision करना, provision for doubtful debts, कितने डेटर्स ऐसे हैं जो हो सकता है हमें पेमेंट ना करें, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने रिसेंटली किया था, ठीक है? इन दिस वे दीज प्रोविजंस आर क्रिएटेड, ठीक है ना बेटे? सो दिस इज, और इसके बाद है प्रोविजंस फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल
future to know about future losses or to know about known losses in future. हमें फ्यूचर में कौन कौन सी लॉसेस होने वाली हैं उनको जानने के लिए हम इन प्रोविजंस को क्रिएट करते हैं ताकि हम अपना एक अच्छा जो प्लानिंग सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. एंड नेक्स्ट, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस. जो ईयर के दौरान एक्सपेंसेस होते हैं उनको इकट्ठा एक ही ईयर में ना चार्ज करके उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी एक ईयर में अनवांटेड अनड्यू प्रेशर ना पड़े प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, इसीलिए उसको हम डिवाइड कर देते हैं ताकि इन कमिंग ईयर्स इक्वल बर्डन ऑन एवरी ईयर्स प्रॉफिट्स विल बी देयर. जैसे हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं 10 ईयर्स के लिए सेट की लाइफ है तो हम अगर 20% से प्रोवाइड कर रहे हैं 10,000 पर तो 1 लाख पर लाइफ उसकी कितनी है 10 ईयर्स. और अगर हम 10% से प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन 1,000 फॉर एवरी ईयर यानी कॉन्टिन्यूसली 10 सालों तक. तो 10,000 का बर्डन एक साल में नहीं पड़ेगा, वो हमारा 10 सालों तक पड़ेगा. दैट इज फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस. तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, why it is important, why it is needed in preparing accounts, so that we can know about the net profit of the business, to ascertain the true financial position and to know about future unknown losses in future. और सबसे बड़ी बात, so that the equitable distribution of expenses or the equitable burden on the expenses will be there. So this is all about provisions. Now next is reserves. अब इसके बाद है हमारे reserves. What do we mean by reserve? अब reserves क्या होते हैं? Reserves means the amount which we are keeping aside to meet uncertainties, emergencies, contingencies in the future. अब provisions create किए जाते हैं as a charge against profit, but reserves are created as an appropriation to profit. Profits हैं तो हम उसका एक हिस्सा जो बचाकर रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी या कोई कंटिंजेंसी ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आती है तो हम इनका यूज करके उस सिचुएशन को टैकल कर सकें. So this is reserve when we are creating equal amount out of our profits. As far as the features of reserves are concerned, these are created out of profit. That's why we can name them as retained earnings or undistributed profits. क्योंकि profit हमारे दो तरह के हुए, एक distributed profit का वो हिस्सा जो हम distribute कर देते हैं अपने shareholders में in the form of dividend, that is known as distributed. और undistributed profit is kept aside in form of reserve. That's why this is known as retained earnings. Reserves are created to meet unknown liabilities. Provisions are created to meet known liabilities. लेकिन जो reserve है वो unknown liabilities को meet करने के लिए create किए जाते हैं. ठीक है? For which we are not sure when they are going to arise. And next, reserve का जो creation है it is not legally compulsory. It is not a legal necessity for business organization to maintain reserves. जबकि provisions को create करना एक legally compulsion है. Then reserve का amount when it is invested outside is known as reserve fund. Means reserves can be invested outside the business. So this is all about your reserves.
एग्जाम्पल वी कैन से जनरल रिजर्व है. जनरल रिजर्व एग्जाम्पल अगर रिजर्व का पहले मैं बताऊं आपको तो जनरल रिजर्व मीन्स दैट रिजर्व which can be used for meeting any type of we can say contingency, जिसका हम कहीं पर कैसे भी यूज कर सकते हैं. फिर हमारे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं लाइक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ताकि डिविडेंड ऐसे रिजर्व को क्रिएट करना ताकि किसी साल अगर प्रॉफिट्स कम होते हैं तो डिविडेंड जो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो इक्वली दिया जाता रहे. गॉट इट? सो it is helpful in meeting unknown losses, equalization of dividend over the years. जो dividend का अमाउंट है रेगुलरली और टाइमली शेयर होल्डर्स को जाता रहे. फॉर द सेक ऑफ दैट रिजर्व्स आर क्रिएटेड, और इसके लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है दैट इज नोन एज अ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. नेक्स्ट है बेटा टू प्रोवाइड फॉर फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लायबिलिटी like workmen compensation reserve. देखो रिजर्व है workmen compensation reserve. अब ये रिजर्व क्या है? workmen compensation नेम से ही क्लियर हो रहा है the amount which is kept aside by business organization to compensate the workers को compensate करने के लिए कब? when they are in trouble, we can say when they have got any accident, कोई उनको physical loss है या materialistic loss है, in that situation workers को compensate करने के लिए जो reserve create किया जाता है that is workmen compensation reserve. इसलिए create किया गया ताकि हमें जो specific हमारी liabilities है उनको हम पूरा कर सकें. ऐसे ही हमारा डिवेंचर रिडक्शन फंड होता है. जो डिवेंचर्स हैं उनको रिडीम करते समय हमें बहुत अमाउंट की जरूरत होती है टू मीट दैट लायबिलिटी. इफ इट इज क्रिएटेड इन एडवांस एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड देन दिस इज नोन एज डिवेंचर रिडक्शन फंड. इन दिस वे रिजर्व इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लायबिलिटी. तो बच्चे दिस इज अबाउट अवर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स. ये हम डिस्कस कर किया हमने कि प्रोविजन और रिजर्व्स क्या होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस. एक हमने ये क्वेश्चन किया जिसके नेक्स्ट था व्हाट डू वी मीन बाय रिजर्व, व्हाई दीज आर क्रिएटेड. एंड नेक्स्ट लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व. आप अपनी असाइनमेंट कॉपी पे ये डिफरेंस जरूर लिखें. Got it? Hope you have got through this lecture very well. God bless you.